Welcome back. In this chapter, we are going to study how to do the API testing in Cypress. So let us create a new test file here real quick. I would say it API testing, rather T should be capital, .cy.js. Okay, यहाँ पे मैं एक describe का ब्लॉग बना लेता हूँ quickly so that I can have all the API tests here. यहाँ पे हम कहते हैं all API test ऐसे कहूँ and function. Okay, so अब हम अपना पहला टेस्ट लिखने जा रहे हैं which is the get method. हम इसके लिए जो साइट यूज़ कर रहे हैं, let me show that real quick to you. So this regress.in इस साइट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे we have get API. So first of all हम ये get की API जो है get list of users इसको कॉल करते हैं. Let us see कि हम इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं. So I'm going to write the get one. So first get method, and I would say now I would paste the URL. हमें sorry I would not paste the URL but I would say the function name. अच्छा, function को write करने का एक ये भी तरीका होता है. We can write function or we can this is a shortcut of the function. We can do it like this as well. And then I would say cy dot request. जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं we say cy dot visit. और जब हम किसी API को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं then we say cy dot request. सबसे पहले जो उसका पैरामीटर होता है वो उसकी टाइप and that is get type and then the URL. And the URL for this is now this one I need to copy the URL of that API जो मुझे रन करनी है. So उस API का URL कॉपी करते हैं. For example I need the API this API to be called, तो मैं ये URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पे I would be pasting it here. And then हमारा जो next काम होगा that would be to you can say अब हमने काम करना है कि अपने इस API के मेथड में यहाँ पे आते हैं हम और अब I would write dot then and dot then में हम ये बताएंगे actually it should be here यहाँ पे dot then and dot then में हम कहते हैं कि जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है यहाँ से sorry my bad I'd say response and response whatever response it is and check in that response okay we are expecting actually a response to have dot प्रॉपर्टी और क्या प्रॉपर्टी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर हम इसको रिस्पॉन्स को यहाँ पे देखें चल के एंड दिस यहाँ पे सो ये वो रिस्पॉन्स है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ गिविंग अस द स्टेटस कोड ऑफ 200. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्टेटस ऑफ 200. So this is this should be it if I'm not missing. Okay, so let me remove this one quick. So this is close and then इसका close and start था and then response. Okay, I think यहाँ पे we need to make it other or this
response star and end, and okay, that is it. So I was missing this brace. So let me save this और मैं इसे close करता हूँ and I would run this again. So nps run. So we are able to run. I am going to now obviously run this API testing. So हमारा API test run हुआ है and अगर हम इसे देखें तो it is actually containing the, अगर हम इसको open in ID करें तो we can see the object. Anyhow we can see कि इसके अंदर 200 was received. So this is how we write the API for to get any object. अभी जो next काम हम करने जा रहे हैं that is API for the post. Quickly एक API post की लिख लेते हैं. Let me say it would be slightly in a different style. Post, and then I would say the function, and then the braces for function, और इसमें हम लिखेंगे cy dot request, and I would say इसके अंदर रिक्वेस्ट में सो पोस्ट की API हमारे पास क्या है जी. दिस इज़ अ पोस्ट API. अगर हम इसका URL कॉपी करें सो सबसे पहले हमें बताना है कि इसका मेथड क्या है. आई वुड से मेथड. सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ, यहाँ पे जो आपने देखा है दिस इज़ अ वे, और एक दूसरा वे ये है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ. सो दिस इज़ हाउ वी डील विद द API, एंड देन हमें उसका URL बताना है ऑब्वियसली जिस API को हम एक्सेस करने जा रहे हैं, एंड दैट वुड बी दिस. और देन कम्स comma, and then comes the body, and in the body हम लोग बताएंगे कि body जब हम whenever we are using the post, it means we are going to create a resource on the server, so we have to pass the body. So I would say name equal to, ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मुझे name और ये भेजना है. If I can show you this API, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें JSON का ऑब्जेक्ट भेजना है. So we need to pass this whatever data we want to pass. Okay, मैं इसे कहता हूँ जी. Okay ji, my API is completed now. This is a post request. I am going to save this and let us see. So the post API was also run, and we can see कि हमारे पास 201 is received, which tells कि हमारी ये API ran fine, because 201 तब हमें मिलता है जब हमारी we are able to create something on the server, and you can see कि हमारे पास ये चीज़ response में return होनी चाहिए. So similarly you can try the put and the delete APIs as well for handling APIs in the Cypress. So we will meet again in our last chapter, that is about the Cypress dashboard.